तो बच्चे अभी भी अंदर है, they just inside। मैं थक जाती हूँ और मैं वैसे भी आ गई नमाज पढ़ने के लिए इधर। मैंने कहा मैं नमाज पढ़ लूँ, असर का टाइम हो रहा था तो मैंने नमाज जल्दी सी गाड़ी में पढ़ ली। आजकल माशाल्लाह किबला का जो आप है वो बहुत अच्छा है, किबला का डायरेक्शन बता देते हैं, तो नमाज पढ़ ली है। और अब दिल भी थोड़ा सा उदास है, फीलिंग सैड फीलिंग, क्योंकि even though me and Nafia gonna go Wednesday to meet Sumaya again, but after 6 weeks when Sumaya leaving, oh my god, जब सुमैया जा रही होती है ना तो बस वो कहते हैं ना, हमारे पुश्तों में कहते हैं जड़ में खुले तराजी, दिल मुंह को आता है। तो दिल उदास सा हो रहा है, कि मलीहा जा रही है कल तांजानिया, हाँ कुछ ऐसे है, और 13 दिन वहाँ रहेगी। तो मैं पाकिस्तान जाऊँगी तो मैं उससे मिल नहीं सकूँगी, बस कल ही मिल लूँगी और फिर कपल वीक्स बाद मुलाकात होगी। तो दिल है कि मानता नहीं, तो दिल उदास है। सिद्दीक और दीना माशाल्लाह वो तो कार्डिफ में है, तो बस कार्डिफ में अब सिर्फ सिद्दीक और दीना रह जाएंगे, क्योंकि मैं और नाफिया, सुमैया कल चली जाएगी ब्रेडफोर्ड और मैं और नाफिया वेंसडे को उसको मिलने जाएंगे, तो मेरी फ़्लाइट तक वहाँ रहेंगे। और मलीहा चली जाएगी कल सुबह इंशाल्लाह 13 डेज़ के लिए हॉलीडे पे। और समी बेचारा ऑलरेडी दुबई में है, तो बेचारा सिद्दीक मेरा अकेला रह जाएगा। वो पहले ही थोड़ा सा डिप्रेस सा हुआ है, भाई के पीछे भी अब हम सब भी जा रहे हैं। तो चलो अल्लाह ताला उनको भी सबब बनाए, खुश रखे सबको। तो बस थोड़ी सी उदासी भी है, खुश भी है कि चलो हम इकट्ठे होते हैं, ज़िंदगी रहे तो दोबारा इकट्ठे होंगे। और बस अभी खाना खाने जा रहे हैं। हालांकि हम कल जो मैंने आपको अपनी दिखाया, कल जो मैंने पोस्ट किया था, जो आपको दिखाया कल जो हमने वागा मामा में खाना खाया, तो हमने कहा ये हमारा लास्ट मील है इस हॉलीडे में। लेकिन अब दोबारा पपाए एक हलाल रेस्टोरेंट मलीहा के घर के सामने बिल्कुल खुला है, और ये सुमैया का बहुत फेवरेट है। ब्रेडफोर्ड में नहीं है तो सुमैया पता नहीं कहीं मैनचेस्टर कहीं वगैरह जाके तो दूर खाती है ये, तो नाफिया कहती है चलो सुमैया को ये खिलाएं। तो अब सिद्दीक, दीना, नाफिया, सुमैया, मलीहा हम सब जा रहे हैं वहाँ पे। और वैसे मैं आपको कुर्ता भी दिखा दूँ, मैंने ये कार्डी का कुर्ता पहना है, पापा खान ने मुझे लेके दिया था। ये एक बहुत प्यारी बच्ची है इंस्टाग्राम पे, उसने मुझे ये स्कार्फ भेजे हैं। उसका क्या नाम है, मेरे ख्याल में उसका नाम है, ओ गॉड मैं भूल गई हूँ, लेकिन ये स्कार्फ उसका है, शायद बाद में याद आ जाए, मैं नाम उसका भूल गई। बहुत प्यारे स्कार्फ है, मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। तो मैं ये तो उसने मुझे 1-2 ऐसे गिफ्ट किए हैं, लेकिन मैं उससे ख़रीदने जा रही हूँ इंशाल्लाह। एनीवे बस आपको थोड़ी सी ये बातें बताई। पाकिस्तान जा रही हैं और मुझे पता है कि पाकिस्तान के व्लॉग आप पसंद नहीं करते हो, लेकिन मैं फिर भी पोस्ट करूँगी। मैं ज़्यादा कोशिश करूँगी कि रेसिपी के व्लॉग पोस्ट करूँ, हेल्थी रेसिपी के, क्योंकि वैसे भी मैं हेल्थ बॉडी ग्रुप के लिए रेसिपी बनाती हूँ हेल्थी, तो वो शायद पोस्ट करूँ। और अब चलते हैं खाने पे, तो आ जाइए मेरे साथ। Okay, come up. I'm a very ugly crier. You know that. I'm so good with roads. My mind is very thin. Yeah, her mind is very good in roads, in computer, in IT, in hisab kitab. Yeah. She can do penny hisab. Not to think I'm stupid. No. You're dumb, but you. So Nafia, You. she say you dumb. I'm a saint. Yes, Yeah. yes. I might just say I'm a very innocent girl. She is. She's right. She is innocent. ये दोनों खाला बांजी आगे जा रहे हैं, वो वली रन कर रही है। अब हम टाउन में अपने आ गए हैं यहाँ पे। वाह, what they doing? अल्लाह, ये देखो कितना डेंजरस काम कर रहे हैं ये। And they're recording it.
ये अल्लाह डेंजरस से डेंजरस काम करते हैं और माँ बाप रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमारी तो जान निकल जाए। चलिए अब खाना खाते हैं। हमारे टाउन है सेंटर है, हमारी शॉपिंग सेंटर लोकल वाली, और ये हमारी बेटी है, ये हमारी नवासी। ये यहाँ पे सारे डिजाइनर शॉप एंड दिस इज वेरी वेरी ओल्ड, वेरी ओल्ड, जमानों का पुराना है ये शॉपिंग सेंटर। ये It's give me London vibes, isn't it? Give me no London vibes. Wait, sitting area. I used to sit here with my kids. और भी आ गए यूसुफ, अमाया ये भी आ गए। 3-4 गाड़ियों में आए हैं माशाल्लाह, बड़ी फैमिली है। जो सारी ब्यूटी होती है ना वो ये बिल्डिंग्स होते हैं। कितना खूबसूरत चर्च है, आई मीन बिल्डिंग कितनी खूबसूरत है। और ये कोई पता नहीं 300-400 साल पुरानी होती है। ये हमारी फेवरेट शॉप पपाई, इसमें हम अब खाना खाएंगे। सारी फैमिली अंदर जा रही है, मैं पीछे पीछे हूँ। So every country goes through recession, isn't it? लेकिन हर जगह जाओ शॉपिंग सेंटर भी बड़ा होता है और खाने की जगह भी फुल होती है, तो ये रिसेशन कहाँ है? तो सबसे पहले मलीहा और कैलब जुदा हो रहे हैं उससे, और कैलब का बुरा हाल है, रो रो के कैलब रो ही जा रहा है। ओए जान माँ जान you going on holiday, Caleb? Why are you crying for? And then you coming to Sumo, to Pakistan, isn't it? Caleb, look to me, give me a big smile, come on. Maliha, see you inshallah. Inshallah, love you. I'll keep bringing you, FaceTiming you. Inshallah. I love you. I love you so much. That I miss you so much. Okay. Love you. You're gonna see it now. Oh. Go and give Hannah. Yeah, but I'm not gonna see you guys, innit? Come. I'm gonna see you in Dubai, inshallah, in October. And I'm gonna see Dina in October in Dubai. And Maliha is coming to Pakistan, inshallah. Oh, Maliha, say goodbye to me. Maliha, you're gonna say goodbye to me because I'm not gonna see you when you come back. Yeah, I'm gonna be gone. When you come back, I'm not gonna be here. So Siddiq said goodbye to Maliha and Sumaya, and the moment was very, very sad, isn't it, Nafia? Maliha. Yeah. Hello, Maliha. No, you know Maliha, but Caleb was crying. Caleb बहुत ज़्यादा रो रहा था, बहुत ज़्यादा। तो अभी सिर्फ उसने, मलिहा ने सिद्दीक को और नाफिया सुमैया को गुड बाय कह दिए। हम अभी मिल रहे हैं क्योंकि मलिहा कुछ सामान पिक कर रही है नाफिया के घर से। तो मलिहा, मैं और सुमैया अभी गुड बाय नहीं कह रहे हैं, अभी हम थोड़ी देर बाद गुड बाय करेंगे। लेकिन नाफिया, सिद्दीक, दीना, हना, मीका ने सुमैया, एला, यूसुफ को और कैलब और मलिहा को गुड बाय किया, तो बहुत ही ज़्यादा सबका दिल बहुत खफा हो गया। अभी हम नाफिया के घर जा रहे हैं। पता नहीं, मलिहा मुझे कह रही थी मुझे गले मिलो, अभी से मुझे गले ना मिलो, मैं नाफिया के घर गले मिलूंगी क्योंकि मैं रो पड़ूंगी और मेरा रिकॉर्ड नहीं करना। तो सिद्दीक भी बहुत उदास हो गया था दोनों बहनों को गले मिलके, क्योंकि सुमैया अभी क्रिसमस हॉलीडे में आएगी, मैं भी तकरीबन 1 महीना 2 बाद आऊंगी। और तो सिद्दीक मुझे तो देख लेगा
और मलिहा को खैर 2 वीक के बाद देख लेगा, लेकिन सुमैया को 3 वीक्स आई मीन 3 मंथ्स के बाद देखेगा, क्योंकि सुमैया अब इंशाल्लाह आएगी उस पे। सुमैया अब इंशाल्लाह आएगी दिसंबर में। तो सिद्दीक और दीना और हना, क्योंकि हना की तो बेस्ट फ्रेंड है एला। एक्चुअली हना सबकी बेस्ट फ्रेंड है, एला की भी, केलब की भी, ये सब एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड है, सब एक दूसरे के बगैर नहीं रहते। तो यूसुफ भी रो पड़ा, केलब भी रो पड़ा। मलिहा को तो खैर मेरी तरह बहाना चाहिए रोने के लिए। तो चले अब मिलते हैं। एक बंदा तो जुदा हो गया है, सिद्दीक ने दोनों बहनों को खुदा हाफिज कह दिया। मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर दिया, क्योंकि सिद्दीक थोड़ा सा फैमिली का दिखाता नहीं है ना, यानी कि ऐसे मोमेंट पसंद नहीं करता कि सिद्दीक रिकॉर्ड कर ले। वो कहते हैं ये प्राइवेट मोमेंट होते हैं, तो वो मैंने इतना रिकॉर्ड नहीं किया है। वरना मेरा दिल चाहता है मैं आपके साथ हर चीज़ शेयर करूं, लेकिन वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। अब इंशाल्लाह चलते हैं नाफिया के घर। और अब नाफिया के घर में मलिहा और सुमैया खुदा हाफिज कहेंगे, मलिहा और नाफिया, और मलिहा मुझसे खुदा हाफिज कहेगी, क्योंकि मलिहा जब हॉलीडे से वापस आएगी तो मैं पाकिस्तान गई होंगी, तो मेरा दिल भी अब उदास हो रहा है। तो चले मिलते हैं नाफिया के घर। नाफिया की कंजर्वेटिव बन रही है, और ये नाफिया का आउट हाउस है जिसमें नाफिया ने ऑफिस बनाया। और ये बाय करने की से पहले अपनी नाफिया की दुकान से हम जब भी हमें ज़रूरत होती है मेकअप की, हम नाफिया से लेते हैं। नाफिया की दुकान से शॉपिंग करने आई है। नाफिया, where's my thing? You say you're gonna give me the bronzer. Which one? Which bronzer? The one I used yesterday. Yeah, that's in your house. Oh, in my house. देखिए ये लड़की इतना पैसा खर्च करती है, फिर कहेंगे कि पैसा करती है। ये देखिए कितनी चीजें हैं इसके पास। I think that looks like got a reaction, doesn't it? No, that looks really nice. Oh, that's so nice. Have you got coral one? How the try these? Oh, try this one. This one is nice. I like this one. Cheeks in it. The liquid cheek. Yeah, I like this one. So what did you say? So sweet. You keep this one then. Maliha, I'm not going to see you for a couple of weeks. No, Mom. I'm so upset. I was gonna cry when you said it, but then I was just like, No, don't cry. Allah di pakhair buzo, pakhair di raro. Allah di mungam pakhair buzo, pakhair. Now, do you have like a light tint color, like do you know like the Dior one, like a lip oil? You could take my Dior one. I got the Dior one. Nafia bought me the Dior one. Nafia, you bought me the Dior one. Do you like that? What do you think? I like cheeks. Do you like it? No, you know I don't decide anything for myself. I cry because you feel like crying. You got so many color on your face because she buying from Nafia shop. Have a look. It looks like your color. Nafia shop पे empty shop. माशाल्लाह मेरी सब बेटियों का दिल बहुत बड़ा है, पर नाफिया का तो कुछ ज्यादा बड़ा है। ये 1000 पाउंड की खरीदती है चीजें और फिर बहनों में मुझे में बांट देती है। ये ओके, व्हाट यू डिड शॉपिंग? शो मी योर शॉपिंग। Well, you reviewed them. ये सो ये इतनी शॉपिंग इसने कर ली है। Where's your shopping? GT7. Yeah, go for darker than that as well. GT8. Nafia, we did our shopping. Show my shopping. That's Mama's shopping. That's my shopping. My pockets are full. You know, I never buy things. I just come here and do shopping from Nafia because she got the best product. मैंने अपनी shopping कर ली है, मैं नमाज पढ़ती हूँ और सुमैया ने भी अपनी shopping कर ली है, मलिहा ने भी कर ली है। नमाज पढ़ के फिर मलिहा हमें गुड बाय कहेगी। So everyone, I look like I've got 100 colors on my face because I just did shopping in Nafia's makeup shop. I've eaten already, but I don't like burger and things. I didn't eat, so I'm gonna miss Mama so much and Papa. I know. I feel like really sad. I cried. You know when I left you and I was walking away to my
I was crying. I cried because you said, I'm not going to see you now. And then I went, and I think I was a bit emotional hugging Sadiq. I was like, aw. I was like, aw. But now Mama always like, forget what you're saying, now show my outfit. Wow, 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 wow. If I was a guy, I would marry you. Allah. I'd take you on a date. Then we go for long walk on the beach. And then I'd hold her hand. Maybe I maybe spank her a little bit too. I don't know, my son-in-law, he eats proper sour food. He puts so much lemon. Hi, baby. But yeah, anyways, Shall we say I'm gonna goodbye miss to you, each other Mama. now? Yeah, we'll say goodbye. But Sadiq, I'm gonna do moons before I go, I think. so I don't know, I'm gonna record that because I know she's gonna cry. So I don't know. If I record it, I record it. If I don't, I don't. So we're gonna say goodbye to Maliha now. And we're gonna say goodbye to Maliha, me and Nafia and Sumaya. Sumaya is going tomorrow inshallah, but I'm gonna see Sumaya again because we're going Wednesday to see Sumaya. And then couple of days, me and Nafia gonna say goodbye to Sumaya. This is life. Kabhi khushi, kabhi gham. Kabhi khushi, kabhi gham. मेरी बेबी रो रही है. You're going for fun. You're gonna see Nafia inshallah in 2 weeks time, and me in couple of weeks time, and Sumo in couple of weeks time. You in a couple of weeks. You're gonna come in 3 months. I'm gonna come quickly because I'm gonna miss you, Law. I can't live without you, Law. That's it. No more Pakistan. Papa can stay in Pakistan and I'm gonna come back. Why are you telling Papa to stay in Pakistan? He should come as well. I just can't live without my children. More baba, more babuja. Don't make me cry, Marie. Hello? When he's gonna come back? I'm gonna come back, inshallah. See her as well. Now Mama's crying. Everybody's crying. We're all crying. Okay. Nafi ain't crying, but I fully cry. Nafi's like, okay, now hi, Iba's not crying. He's so rude. He is so rude. Look. He's so rude. You see that? You're rude. You're rude. No. He's just a troll. Biggest troll going. But I'm an emotional wreck and I'm very sensitive, so yeah. Nafia, why are you giggling? Stop. No. She's almost the size of you. Be careful. Be careful. Abul chota Maliha se show. Oh my god, he gonna have so much fun. I'll keep FaceTiming you guys. Pick up. Nafia,